You must have come across that. So that is what context is. A context aware chatbot is a type of conversational agent that understands and remembers the context of a conversation. Why is this helpful? This is helpful to maintain the flow of the conversation, making a natural flow. So if I just use any LLM and ask it who is Alan Turing, and I ask a follow up question that what were his contributions, it would automatically understand who I am referring to, what his is. So here the word his relies on context established in the previous questions. So it understands that. So how it happens? There are basically four ways in which it happens. If you want to know more about context in LLMs, I suggest you watch a YouTube video regarding transformers about the self attention mechanism. That is a whole level deep learning topic. We will not be covering that. I'll just touch upon it from a little bit. I hope it's clear till now. किसी को कोई doubt या कुछ and if you are following up, you can just let me know. All right. So how are LLMs context aware? So there are four ways basically. The first one is prompt as context. When you chat with GPT or any LLM, it processes everything on time, and you include. Meher, could you confirm if my voice and screen is visible? All right. Sahil, could you please take a look at your network? That would be helpful. So yeah, prompt as context. You talk with LLM, it understands, it takes, and it stores it in memory. All right. So the memory part is a bit tricky, but we'll not be touching upon that. Next up is context as a window. If you are using an API key, or if you are talking to a chatbot, a token is actually the word that you're typing. If I ask it, who is Alan Turing? So who is one token? So similarly, the context window of various LLMs are listed over here, right? So everything that user inputs, history plus documents. Now you can upload documents also in your LLMs and chat with them. So these are the tokens, and it is taken as a context window. And within this window, if it finds that you have referred to something, it would give you response based on that. Next one is semantic understanding. Semantic is basically your language and its jargon. Understanding pronouns, reference, and any topic using the pre-training on billions of sentences. When it is a large language model, it is called as large language model for a reason. It is trained on billions of sentences, right? So this is what semantic understanding is. These are the three. The last one is your retrieval augmented generation. Now what we will be building today would be similar to this, not exactly RAG. So RAG is basically a system in which your LLM refers to a database, and in this database, it is a special type of database, not like your SQL or NoSQL database. This is a vector database. When I say vector database, what it does is it takes words and information and creates vectors, मैथ बेसिक जो मैथ्स वाले वेक्टर्स होते हैं, जिनको हम embeddings कहते हैं. According to those confidence scores, it refers to the database and then answers. So it is used using LangChain also. So it stores your past interactions in a database. Example of this type of database is like most popular one is Neo4j, or Chroma is also one of them. So yeah, these type of databases are there, and they retrieve relevant information, and then the LLM parses that input into natural language so that you can understand. So it answers through that. I hope I am clear up till now on how your LLMs are context aware. All right. So what we'll build today, we'll build a semi-context aware chatbot using TF-IDF and cosine similarity. Now TF-IDF and cosine similarity are like core ML topics, not even deep learning. So you can call this a pseudo RAG based bot as well. What we'll do is we'll upload a document and we'll ask questions from that.
So for the document, it will be passed using these methods, TF, IDF, and cosine similarity, to find chunks in your document which are relevant to the question that the user has asked. So we'll be doing that. We'll be using Gemini API, Python, and Streamlit. Streamlit is basically used to make your interface, and we'll use the Google Generative AI library. So we'll be doing this. Let's see the flow of the project that we'll be building. So the project flow is going to be like this. First, the user will upload a file. Then the text is chunked and vectorized. When I say vectorized, vectorized is basically creating vectors corresponding to your text, and this is actually done through transformers again. After the session, I'd be happy to share a video about that. You can watch that to understand more. Then the user will ask a question. The top matching words in the document will be retrieved using cosine similarity. Then we'll give the Gemini LLM a prompt that you have to do this, 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 then the question that the user asks, and Gemini API will give the answer, and we'll show that response in the chat. So now let's see what's TF-IDF. So TF-IDF is term frequency and IDF is inverse document frequency. So TF is how often a word appears in a document, and IDF is inverse of that, basically how rarely it appears. So the multiplication of this is mathematics. It is taken care by the Python library. You don't have to do this manually. Again, we have cosine similarity is a way to measure how two texts are similar, even if the words don't match exactly. For example, if I have a word, let's say happy, sad, and joyful, and melancholy. So if you actually take a look at the transformer architecture, you will see that the negative words that were sad and melancholy would be towards, like, they would point to a direction which is common because they're negative and they have a common meaning. Similarly with the happy ones, the positive ones. So that's it. So we know that cos 90 is 0, right, and cos 0 is 1. So using the cosine formula, it is calculated. So this is going to be the project flow, and we'll be building this chatbot. So I hope I'm clear up till now. Any doubts, any questions, you can ask. All right. So let's take a sneak peek at the project that we'll be building. I have already built a demo for you guys to see. Just a second, I'll show it. I'll also share the GitHub repository in the group so that you can refer to it. But don't just copy paste the code, because copy pasting is not a good thing. So yeah, let me share my screen. So yes, this is the interface using Streamlit, and this is a retrieval based chatbot with local semantic search. So what I can do is I can upload a TXT file or a PDF file. Let's say I'm uploading this. So this is a document about softwares, about the common development points that are going to be aligned within two projects. So let's see if it answers your general queries as well. So if I just say hi, it is greeting me because Gemini is working. It is taking the general queries as well, and it will also take the normal related to the document. If I ask it what's the document about, it will answer what is the document about. See, it is answering that the document describes a system architecture with several key components and all the stuff. So it is working fine. You can upload any file, any document, but we have a limit over here because this is like given by Streamlit only. To up to 200 MBs of file you can upload and ask queries. You can ask questions from your research papers. You can ask questions about any document. So this is how the our interface, our project would look like.
So now this is going to be a hands-on session. Either you can watch the video later on to refer on YouTube. You can refer to the GitHub repository as well. And obviously I'm here to take you step by step on how to make this. So now let's move on to VS Code. And you guys can also open your VS Code side by side. If you have any queries, just type it in the chat or uh, show it to me. I'll be happy to help you out. Uh, I just have one question. Is my screen clearly visible to all of you? All right. Okay. So let's move on. Okay. So I am using Linux, so there would be difference in commands. So don't worry about that. We'll create a new folder here. We'll call it Gemini Chatbot. Now let's open this. Now, before that, let's move on to the API key that we need to get. So, you all can go to aistudio.google.com. This is basically a Gemini playground. You can experiment with it. So, if you are coming on this platform for the first time, it will ask you to accept two terms and conditions. Just accept them and click on Get API key. I already have my API key over here. Let's create a new one. Don't worry, it would not ask you about Google Cloud projects. I have connected my account, so it is asking me. So, first thing that you all can do is just get your API key and then just let me know if you have done that, and I'll just drop this link in the chat section. When you all get your API keys, you can just let me know. Guys, you can open your mic. I would love if you guys are actually speaking, but it's fine. Alright, so I have also shared the GitHub repository link on the group. Alright, so now let's move on to VS Code. So this is my API key. I have noted it down. You need to handle it safely. So the first thing we'll be doing is we'll create a virtual environment. So I like to work with virtual environments because when you install Python and you have things globally, sometimes dependency issues occur and you may not be able to, you might encounter some issue. So virtual environment is basically you're creating a separate environment for a project जहाँ पे सब कुछ scratch से install होगा. So let's make a virtual environment. This is the command. Okay, so you can see the virtual environment has been created. Now I need to activate it. Now this activation command is different in Windows. I'll tell you just a second. After activating your virtual environment, you will see that it is shown that it is activated. In Windows, this command is going to be this source env/script/activate. So yeah, the command would look like this. You can activate your virtual environment. I hope everybody has created their virtual environment. You can just let me know. After creating your virtual environment, we'll need to install some libraries. We'll do that. You can also install them globally. There is no issue. But yeah, it is always a good practice to create a virtual environment. Have you all created your
Please show the code for virtual environment again. This is the command. Open your VS Code terminal from here, new terminal. Then just check once. In my system, it works as Python 3. It might work as For Python. Windows, we have to use Python, just Python. Yeah, VNV is your virtual environment, and ENV is the name of your virtual environment. All right. Now we'll install some libraries. First, we'll install Streamlit. You can do pip install Streamlit. Streamlit will help us create our UI for the bot. Meanwhile, yes, Streamlit is installed. Next up is pip install py PDF. Now, py new PDF would help us work with the PDF that we will be uploading. It would help us translate it or document it. It would become easier. Then we'll install pip install Google Generative AI. After this, we need to install scikit-learn. Scikit-learn is again a core ML library. I'll just write all the necessary things that need to be installed. You can use this as a singular command as well. So we have created this. Now we'll create a requirements.txt file. The command to create it is pip freeze requirements.txt. जितनी भी लाइब्रेरीज हमारे एनवायरनमेंट में अभी हैं वो सारी यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी. अब requirements.txt क्रिएट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि when we'll be deploying a Streamlit application it would be needed, so it is better to create it beforehand. So these are the libraries that we'll be needing and which are available in our environment right now. So this is the command to freeze it. You can also yeah, so this is done. Now we'll create a file app.py. You can create it from here as well, but no issue. So we'll import certain libraries. So these libraries are going to be useful when it comes to creating our bot. So one of them is going to be obviously Streamlit. Import Streamlit as import OS. I hope you all are following me. You can just give me a heads up. All right. All right. So yeah, in scikit-learn we'll be using some other uh, feature extraction function for the TDF IDF thing that we need. You can write from pip in import TDF IDF vectorizer. Then the cosine similarity. Then we have this import text wrap
import feeds. So this feeds is basically used by PyMu PDF for the PDF handling part. Yeah. So these are the necessary libraries that we need to install. Now let us set the Google Gemini API's environment. Now before that, handling API keys is very important. That it is important that you handle it carefully. So we'll create a folder called as .streamlit. Uh, Now this Streamlit folder is used to add all the files that are related to your Streamlit. So it has a file called as config.toml, a file called as secrets.toml. So we'll create a file secrets.toml. Now in this file, I am going to store my API key. Gemini. First of all, .toml is actually Tom's optimal minimal language, which was created because a developer was frustrated of YAML files. So this is very easy to use. You just need to specify that this is going to be related to Gemini. Then you can write API key. I am going to add this API key over here. So what will happen is when you push this code to GitHub, this file would not be pushed. So you don't want your API keys to be exposed publicly because that's a security issue. So this is about it. Now next up we'll set it up so that we have our API key in the environment as well. We'll write API key st.secrets. We'll write Gemini key. Oh yeah, add these. So from your secrets file, Streamlit's object st will take the API key. Next step is you are going to use genai dot configure function. Yeah, this is the configure function. So we have imported. Okay, we have not imported. My bad. Dot generated AI as GenAI. So this library is imported and its object is GenAI. So we are using the GenAI object to configure and store our API key. Yeah. So we have got the API key in our environment. Now we are going to specify the model that we want to use. Now the model is like there are tons of model available in Google AI Studio. If you take a look, uh, yeah, you have many models over here. You can use anyone. When I was building for the demo, since this API is free, it has certain limit. The limit is like 15 requests per some minutes. So I have exhausted it for some of the models. So for this one, I am going to use this model, Gemini 1.5 Flash. If you want, you can use Gemini 2.5 Flash. 2.5 Flash, I believe, is the latest one. So yeah, we have uh, set the Google Gemini API key as well. I hope everybody has followed me up till here. You can just let me know. All right. Next up, we are going to set the configuration for Streamlit. See, Copilot is already helping us to build this project, but I don't think it knows what we are building. It's giving some random suggestions. Streamlit configuration. Now in Streamlit, actually Streamlit is built on top of HTML and CSS only, but it eases your task in Python so that you can focus on building certain other things like
your ML models and all. So Streamlit is basically a library that is used to build ML and data analytics apps. So when you are building the dashboard or the UI for it, it is very simple. So you just have to use the Streamlit object. I am going to set page configuration over here. So the page title is going to be, let's call it Gemini chatbot. Gemini chatbot. I want my layout to be centered. There are many options, so you can juggle through them and see what suits you best. But yeah, let's go with this one. And the page icon is basically some sort of emoji that is there, that Copilot has already given, but I don't want any emoji, so let's just leave it. Next up, I am going to set the title in the page. Sorry, not, yeah, in the page only. I can call it retrieval, not exactly retrieval augmented chatbot, but retrieval based chatbot, because we are not building a RAG application over here. Now we have set the configuration for Streamlit as well. Now we are coming to an important part. So this important part, please pay attention. We are going to use the chat history. So if the chat history is not present already in in my session, I am going to create it. Now where did this word history come from? When you are working with the Google Gen AI library, there are certain features that it gives you. So it gives you access to handle the session state and configurations in your LLM. So yes, if the session does not exist, we are going to create it. So this is how it is going to be created, that if history is not existing in our session state, we are going to create it. Next up, we are going to set the state. So if the state is basically when you interact with your LLM and you have history with it, right? If the history does not exist, that's some state. If history exists, that's some other state. So yes, we are going to set the page setup also with this. So I'm just going to write if history Copilot is really helpful, because yeah. So if the state history is not present, it will create it. Now coming to the chunking part of the documents, let's just come here. If you come here in this repository, you will find some sample data. Now this sample data has information about university. So when you have this text, you are going to what we are going to do here is we are going to divide it in chunks of 300 tokens. So each token is like university is a token, this dash is also a token. So we are going to divide it into chunks with using the TF-IDF vector. Then after that, we are going to use cosine similarity to find top similar chunks that are going to be asked by the user in the prompt. So I hope that's clear, and you guys are following me. You can just let me know. All right. So this is the history thing is done. Now coming to the chunks. Now this chunks keyword is also already present in the generative AI library. So yeah, if chunks does not exist in the session state, we are going to create it again from scratch. So this is how chunks would work. Now what we are going to create is we are going to create a helper function which would help us to get the chunks. So we are creating a basic Python function. Chunk size is equal to 300. So we have defined our function that chunk, this function is called as chunk text. We will give it some text, and the size that we are going to
allow it to split the document or the words into is going to be 300 tokens. Now what we are going to do is we are going to return this thing as yes text wrap. So what it will do is it will wrap this text into different chunks and the width of the chunk is going to be 300. This function is done. Now we are going to if you would have seen over here in the chatbot, you have the capability to upload your file as txt or pdf. Now when we are uploading pdf it would be handled differently. When we are uploading txt file it will be handled differently. So to help us to handle the pdf file we will need to create a function which would extract the text from PDF. So this chunk text function will be first used, then this extract text function will be used. Let's call this function extract text from PDF so that we don't have any confusion. Chunk size is, I think Copilot has given some other things. We don't need this. We are going to do it differently. Now using the fits library that we imported, we are going to open our PDF and we are going to use streams over here. So what stream would do is it would help us upload the PDF file uh, so that we have it in our system. So it will be like you upload this file, then it is converted into chunks. So this stream, like if you have worked with files in C++ also, we have streams over there. It is similar to that. It is going to be uploaded PDF and we are going to read it. After reading this, we are also going to specify the file type. Yeah, file type PDF. Then we'll have some text, but this text would not be like, we don't have the text currently. So for page in the document, this is again provided by this vids library and text app. So we'll upload our text. Then in the page what you are going to do is you are going to iterate over it and check for your for page in doc. Yes, this is correct, I believe. Yeah. Now we are going to return this text. So we have created extract text function as well. We are just going to iterate over our text and create chunks and store it in this string. Now we have created our helper to process the file for PDF. Now what we'll do is we'll create a helper function that would help you to get relevant chunks from the document. So let's create this function as well. We'll call it get relevant chunks. We'll just take query. Since the user will be giving it some query, we'll be matching it, right? So what we'll do is we'll create again a session. This vectorizer is again your vectorizer from the TL5df and we are going to apply this function called as transform query. So what it will do is it will transform your query into a vector. Now it will be matched with the chunks that you have created, like what are the top chunks and the stuff. Now finally we are going to use our cosine similarity to get the relevant chunks. So we'll create similarities
cosine similarity vector area. No, it's giving something else. Cosine similarity comma, st session state. We are going to use a different function which is chunks vectors dot flatten. When I say flatten, what we are going to do is we are going to see these matrices that are converted using vectorization. These are like 3D, 4D matrices. We cannot work with them. So we need to flatten it into a one-dimensional array. Alright. So this is what we have done till now. I hope you all are following me. If you have any doubts or anything, if you want me to copy paste the code in the chat, you can just let me know. Or just give me a thumbs up if I should move ahead. Alright. So we have this similarities also. Now here what we are going to do is we are from the vector that we create. Now this is a topic that requires a bit of mathematics, but the thing is the vectors or the arrays, one dimensional arrays that you create, now you are going to find certain matching numbers. like अगर मेरे पास एक word है sad और एक और word है happy, these are not matching. so जो vector में value stored होंगी, जो top पे stored होंगी, वो similar नहीं होंगी. like 4 है तो मान लो 10 होगी. तो these are different. But if I have similar words like happy and joyous, so I might have 4 and 5. so जब हम यूजर से क्वेरी लेंगे, so जो हमारा ये फंक्शन है ये मैच करेगा कि डॉक्यूमेंट में कौन से जो वर्ड्स हैं और जो उनके वेक्टर्स कन्वर्ट हुए हैं वो मैचिंग है. तो दिस इज व्हाट टॉप सिमिलैरिटी टॉप इंडिसेस इज गोइंग टू बी. And yes, copilot is correct. We are going to use this arc sort function, and it is not going to be -3 5. We are going to use this because this is again a maths. Since we have created what 300 size के chunks, so जो indices हैं वो हमें उसी हिसाब से लेनी है. So it's going to be -3 from 1. You can experiment it with different values also. थोड़ा डिफरेंस आ सकता है आपके रिजल्ट में कि वो कौन सी टॉप वैल्यूज ले रहा है. अब मेरे पास एरे है, उसमें से अगर मुझे टॉप इंडिसेस लेनी है तो जो -3 से अगर शुरू हो रही है तो इट्स लाइक टॉप की 3 ही ले रहे हैं. आप चाहो टॉप की 10 भी ले सकते हो, बट फॉर द रेलिवेंसी, सिंस हम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो छोटे हैं, तो वी आर ओनली गोइंग टू टेक लेट्स से टॉप 3 ओनली. So this is about it. Now I am going to return this. Now returning, what we'll be returning is we'll be returning a session state again containing an array of chunks, and it will have your top indices. Right. So we are going to use join function. Yes, it is correct. So we are going to use our session state, and in this chunks array you will find the top indices here. जो यहाँ पे इसमें फाइंड करेगा जो आपकी टॉप इंडिसेस हैं और हम उन्हें रिटर्न करवा देंगे. सो ये हमारा क्या कहते हैं हेल्पर फंक्शन फॉर relevant chunks is also done. So I can just write here some comment, helper function to get relevant chunks. This part is done. Yes. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हमारा पार्ट आता है कि हम जेमिनाई को क्या बताने जा रहे हैं. तो हम डायरेक्ट जेमिनाई को ये नहीं बोलेंगे, लाइक इसको हमें एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. दिस इज लाइक हाउ योर एजेंट्स ऑल्सो वर्क, दैट यू गिव देम सम इंस्ट्रक्शन and they work on that instruction only. So what instruction, and we are going to build a prompt and we are going to give it to Gemini. So you cannot call this project as an agent. This is a simple pseudo RAG based project. Agents are like they work on a large scale. So we are going to build a prompt. We are going to take the query from the user. What we'll do is we'll
get the chat history first. Chat history. Join. Now again we are going to use join function. This is like vector वाला join करने वाला function. बट दिस यहाँ पे ये वेक्टर वाला जॉइन है. इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अगर आपने वो यूज़ करा है पाइथन में, ये यस दिस वन एफ जो ये लिखा हुआ है, और किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो यस, दिस इज योर फॉर्मेटर. यूज़र की क्वेरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है. एंड जो बॉट है या असिस्टेंट है उसका ये प्लेस होल्डर हो गया. लेट्स नॉट कॉल इट असिस्टेंट. दिस इज नॉट एन असिस्टेंट, लेट्स कॉल इट बॉट. एंड यूज़र के लिए यू ले लो बिकॉज आई लाइक यू in the sense of this. And yes, so we are going to take this is going to be your session and state history. And we are not going to take the whole session history, we are only going to take the टॉप वाले. तो टॉप वाले यहाँ पे हमने जो लिए थे वो -3 से थे. सो या ये हमारी चैट हिस्ट्री बन चुकी है. अब हमें क्या करना है, चैट हिस्ट्री अब बन चुकी है. अब हम इसे कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे कि एलएलएम तुम्हें ये करना है. तो इट इज़ गोइंग टू बी कंटेक्स्ट. उससे पहले यहाँ पे कंटेक्स्ट इज इक्वल टू गेट रेलेवेंट चंक्स. तो ये जो हमारा फंक्शन था गेट रेलेवेंट चंक्स, हम यहाँ से कंटेक्स्ट लेंगे पहले क्वेरी का. देन वी आर गोइंग टू गिव इट अ प्रॉम्प्ट. Now the prompt is going to be, you can specify anything, but what I am going to say is that you are a helpful assistant that answers queries based on context. You are a help, yeah, that would be fine. You are a helpful assistant that answers questions based on provided context. Yeah, that's fine as well. नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कंटेक्स्ट. यहाँ पे जो आपका कंटेक्स्ट है ये एक, आप जैसे अगर आपने HTML में भी बॉयलर प्लेट होती है, उसमें प्री फिल्ड चीज़ें होती हैं, राइट. ये भी एक बॉयलर प्लेट है जो ये वाले गूगल जनरेटिव है वाले में लाइब्रेरी में स्टोर्ड है. कंटेक्स्ट में आपका कंटेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है. चैट हिस्ट्री में आपका चैट हिस्ट्री चली जाएगी. देन यूज़र की क्वेरी आ जाएगी. देन ये बॉट आपको रिटर्न कर देगा प्रॉम्प्ट. तो ये जो बिल्डिंग अ प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन है, इट इज़ गिवन बाय दिस ओनली. इसका ये एक आप मान सकते हो प्री डिफाइंड टास्क. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ईशान आपने, हाँ यू भी यस ले सकते हो. या तो हमारा ये वाला हो चुका. अब जो हम मेन काम पे आ रहे हैं, नॉट द मेन चीज़ें हो चुकी है. हमने अभी तक क्या करा, हमने अपना API सेटअप कर लिया, हमने हमारी स्ट्रीमलेट की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर ली, हमने हिस्ट्री का काम कर लिया, हमने PDF एक्सट्रैक्शन का काम, रेलेवेंट चंक्स का निकालने का काम और प्रॉम्प्ट बिल्डिंग का भी काम कर लिया. नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रीमलेट वाला एप्लीकेशन था यहाँ पे, इस एप्लीकेशन में ये UI बनाने पे काम करेंगे. पहले लेट्स स्टार्ट विद द साइड बार कि यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन है. आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, डजेंट मैटर, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक, व्हाट इज योर प्रेफरेंस. सो स्ट्रीमलेट में अगेन यू कैन गिव द साइड बार. yes, the title is going to be upload PDF. Then uploaded file is going to be this uploaded. We are not going to use the PDF function, we are going to use upload file, क्योंकि हम दो टाइप की फाइल ले रहे हैं, .txt एंड PDF. तो साइड बार डॉट फाइल अंडरस्कोर अपलोडर, अपलोड txt और PDF file. Type is going to be again, you can even take CSV files as well, your Excel files as well, and ask your this assistant to help you with that. So but we are
taking txt and pdf files here only. So if uploaded file, if the user has uploaded a file, what we'll do is we'll take the file type and then we'll split it. यहाँ पे फाइल की स्प्लिटिंग इसलिए हो रही है, एंड दिस स्प्लिटिंग विल बी डन फ्रॉम द, जैसे आपके पास एक पीडीएफ है, मान लो यही वाला है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, नीचे से स्प्लिटिंग होती है एंड देन हम इसमें अपने हेल्पर फंक्शंस लगाएंगे ताकि हमें रेलेवेंट चंक्स वगैरह मिल पाए. अपलोडेड फाइल डॉट टाइप -1. Then we are going to process our file and process it by uploaded file को चेक करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस हो गया. अब आप चाहो तो एक मैसेज दे सकते हो कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है. तो दिस इज़ द मैसेज, जैसे हमने डेमो में भी देखा था कि फ़ाइल अपलोड होने पे लिख के आ रहा था. अब जो st.success है, इट्स बेसिकली लाइक अ बार जो कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन हो गया पूरा कि यस यू हैव अपलोडेड. अब लेट्स कम टू बिल्डिंग द चैट इंटरफेस. सो जो चैट इंटरफेस है, इस पे हम एक हेडिंग देंगे. लेट्स कॉल इट आस्क अ क्वेश्चन. यस, नाउ यूजर एक क्वेरी देगा विच वाज लाइक, यूजर को क्या पूछना है. यू आर गोइंग टू टेक अ टेक्स्ट इनपुट. तो स्ट्रीमलिट में बेसिकली यू गेट दीज फंक्शंस जहाँ पे आप अपना जैसे एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट, आपको एक फील्ड मिल जाएगी इनपुट देने के लिए, सब हेडिंग की एक फील्ड मिल जाएगी एंड ऑल दैट. सो इट गेट्स ईजी. तो अगर आपको ये फंक्शन नहीं भी याद है तो यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन आस्क जीपीटी, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम कोपायलट एज वेल. नाउ अब हम एक बटन देंगे. अब इस बटन में ही हम सारी जो हमारी फंक्शंस वगैरह हमने यूज़ करे हैं वो पुट करेंगे. तो हम बटन का नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट आस्क बटन. नाउ ये जो आस्क बटन है और यूज़र क्वेरी, मान लो यूज़र ने क्वेरी पूछी है, ये दोनों एक्टिवेट हो गए. बेसिकली यूज़र ने क्लिक कर दिया है. तो और जो हमारा एक और चीज़ है विच इज़ एंड योर सेशन स्टेट इज़ ऑल्सो एक्टिव. एंड st dot session state dot vectorizer. ये अगर क्रिएटेड है तो जो हमारा प्रॉम्प्ट बिल्डिंग वाला फंक्शन था हम वो यूज़ करने वाले हैं. ऑलराइट, सो व्हाट वी विल डू इज वी यूज़ आवर प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन था प्रॉम्प्ट बिल्ड यूजर क्वेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज द फंक्शन. सो यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है इसमें हमने फंक्शन अगेन यूज़ कर लिया है जो हमने बनाया था हेल्पर फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ सम एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब इसमें हमारा क्या होगा कि जो मॉडल है वो रिस्पॉन्स देगा. तो इट्स गोइंग टू बी रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मॉडल. मॉडल इज बेसिकली दिस thing here, Gemini 1.5 Flash that we are going to be using. तो मॉडल का नाम यहाँ स्टोर्ड है मॉडल, इट्स इसीलिए मॉडल. मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, नॉट जनरेट टेक्स्ट. कंटेंट prompt, based on the prompt it will give you the text. So ये हमने यहाँ तक कर लिया. नाउ अब जो हमारा बॉट है हमें उसका रिस्पॉन्स भी शो करना है. सो दिस बॉट जो रिस्पॉन्स होगा वी आर गोइंग टू शो इट अगेन. ये जो रिस्पॉन्स है आप उसको कैसे भी शो कर सकते हो. आप चाहो तो पूरा ना शो करो, आप चाहो तो पार्स कर दो उसको, बट लेट्स जस्ट टेक द होल थिंग एंड यूज़ दिस स्ट्रिप फंक्शन. अब ये स्ट्रिप फंक्शन से क्या होगा कि
इट विल बी शोन इन अ बेटर वे। अब ये जो स्ट्रिप फंक्शन होता है, अगर आपने पाइथन में लिस्ट यूज़ करी है तो आई बिलीव स्ट्रिप फंक्शन से सारे वर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं, राइट? एंड देन आप उसको शो कर सकते हो अलग अलग तरीके से, जैसे भी है। अब हम क्या करेंगे, एस टी एक सेशन जो हमने क्रिएट करा था स्टेट हिस्ट्री का, उसकी उसमें हम ये बॉट का रिप्लाई और यूज़र की प्रॉम्प्ट डाल देंगे। एंड जब हम इस सेशन स्टेट हिस्ट्री में डालेंगे, इसी से हमारा कंटेक्स्ट अवेयर बन रहा है। इट्स नॉट फुल्ली कंटेक्स्ट अवेयर, कुछ प्रॉम्प्ट्स तक ही रहेगा। आफ्टर दैट उसकी हिस्ट्री लाइक वो हो जाएगी, रीलोड हो जाएगी। क्योंकि अगर आप हर बार न्यू लिंक से एक्सेस करोगे ये प्रोजेक्ट, तो क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री उसमें सेव नहीं रहेगी। बट व्हेन इट कम्स टू एलएलएम्स लाइक जेमिनाई, जीपीटी एंड मिस्ट्रल एंड ऑल, यू सी कि आपको पुराने सेशंस की भी मेमोरी उसमें स्टोर रहती है। बट यहाँ पे स्मॉल स्केल का प्रोजेक्ट है, इसलिए वो नहीं होगा। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस st.write. Let's not use write, let's use success that you are getting the reply. stu success, response generated successfully. अब जो ये रिस्पॉन्स है ये जनरेट हो गया है, इसमें एक्सेप्शन क्या आ सकती है? बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का केस है यहाँ पे। एक्सेप्शन आएगी जैसे कि आपकी एपीआई की वर्क नहीं कर रही, या फिर आपका कुछ और एरर है, या जेमिनाई ही रिस्पॉन्स देने से मना कर रहा है, तो वहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगी कि आपका ये नहीं शो हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेप्शन। अब जो हम चैट को है उसे डिस्प्ले करेंगे। इसमें एरर क्यों आ रहा है? फ्रॉम एसक्यूएल, यस ये फिक्स हो गया। एक्सेप्शन, लेट्स सी, इसको बाद में देखते हैं। आउटपुट जो आएगा उस पर हम बेस देखेंगे। अब हम जो हमारी चैट है उसे डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अगेन जो आपकी सेशन स्टेट हिस्ट्री है, हम उसी के साथ खेल रहे हैं ऊपर नीचे। अब हमें एक सब हेडर शो करना है, अगेन कोपायलट इज हेल्पिंग। सो या एक बार लेट मी सी इफ, नहीं ये चीज़ें नहीं, इफ सब हेडर सॉरी, इफ द सेशन स्टेट हिस्ट्री एग्जिस्ट देन योर सब हेडर विल बी नॉट चैट हिस्ट्री। क्योंकि अगर आपने नोटिस करा, ये जो डेमो था उसमें शो हो रहा था पुराने जो आपके प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी ये। सो यही है हमारी सेशन की स्टेट हिस्ट्री, या फिर कंटेक्स्ट आप कह सकते हो। सो यही बार बार शो होगा। आप चाहो तो इसे शो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट लेट्स जस्ट शो इट फॉर द टाइम बिंग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज, वी आर गोइंग टू यूज यूजर कॉमा बॉट। वाई आर वी रिवर्सिंग इट? इफ़ यू लुक हियर, यहाँ पे पुरानी जो सबसे प्रॉम्प्ट है वो सबसे नीचे आ रही है। सो दिस इज़ लाइक रिवर्स्ड। अगर इसे हम रिवर्स नहीं करेंगे तो ये फर्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो सबसे टॉप पे शो होगी। वी डोंट वांट दैट। आई होप, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। आई थिंक एक्सेप्शन ही लिख दिया मैंने और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने लिखा क्या है। थैंक यू सो मच। Yes, accept exception as e. What we are going to do is we have reversed this chat history. Now what we are going to do is, जो basically, let's not use write, let's use markdown. Yeah, this is fine कि user like this stuff over here, ये जैसे you लिखा है या bot लिखा है, this is the thing. लेट्स कॉल इट यूज़र, वहाँ पे यू है, डजेंट मैटर। नेक्स्ट अब आपको बॉट का रिप्लाई मिलेगा। लेट्स ऐड वन लाइन ओवर हियर कि जो हमें दिस ये वाली लाइन ये शो हो जाए। सो हमने हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है आई बिलीव। कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। यस, सो ये हमारा कोड है। अब हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रीमलेट वाली फाइल को रन करेंगे। अब द थिंग इज, जैसे ये स्ट्रीमलेट है, इसका डिफ़ॉल्ट यूआई यूएक्स में ब्लैक कलर इज द कॉमन वन। इफ़ यू डोंट वांट दैट, व्हाट यू कैन डू इज you can come to settings and click on edit active theme. अब जैसे आप एक बार रन करोगे फिर ये आएगा। अब अगर मुझे थीम चेंज करना है तो आई कैन, ये डिफ़ॉल्ट वाले कलर्स हैं,
यू कैन कॉपी द थीम टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे डॉट स्ट्रीमलेट में यू कैन क्रिएट अ फाइल जिस जो कि होगी config डॉट टॉमिल। नाउ config डॉट टॉमिल में ही शो आपका जो थीम से रिलेटेड इन्फो है वो स्टोर होगा। तो जैसे इसमें डिफ़ॉल्ट तो डार्क है, आप इसे लाइट भी कर सकते हो। लेट्स डू इट लाइट। सो ये हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट कोड। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। अब स्ट्रीमलेट में यू कैनॉट जस्ट रन द फाइल। व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू राइट दिस कमांड streamlit run app.pl। अब ये सब बताना खोपड़ी खोपड़ी क्या है सिखा के मेरे को ये सब खोपड़ी क्या मैं तो पता मुझे यार सारे आई थिंक स्मॉल एल होगा यहाँ पे। स्मॉल री रन करना पड़ेगा। gen ai dot model is not available। आई थिंक मॉडल की जगह जनरेटिव आना चाहिए यहाँ पे। या इट्स जनरेटिव मॉडल आई बिलीव। हाँ, सही भी होगा। यस, ये हमारा यूआई शो हो रहा है। यू कैन ब्राउज अ फाइल। लेट्स डू वन थिंग। ये यूनिवर्सिटी वाली फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। होम में जाके ये फाइल यहाँ पर यहाँ पर ये सैम्पल डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो यहाँ से भी कि जो ये अपलोडेड फाइल्स हैं आप उसमें सैम्पल डेटा txt का ही पाथ दे दो। बट हमें यूज़र से मांगनी है फाइल, तो लेट्स जस्ट कम ओवर हियर। ये हमने अपलोड कर दिया। अब फिर से एरर आ रहा है। ओके, इन लाइन 75 प्रोसेस फाइल। ओके, प्रोसेस फाइल का फंक्शन आई बिलीव हमने कोई इंपोर्ट नहीं करी है लाइब्रेरी। लेट्स सी। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट ऑलराइट। लेट्स आस्क Copilot what's going on। Close, let's not accept this। uh by the way, are you all following up? You can just let me know। Okay. Hmm, let's see if this thing is able to fix it or not।
ओके, सो हमने प्रोसेस फाइल का फंक्शन नहीं क्रिएट करा है। My bad. यहीं पे क्रिएट कर देते हैं हमेशा। Now this thing would work. Uploaded file. Yeah. Now let's rerun this thing. File processed. Okay. Let's just ignore the warning for just some time. We have one more error in line 104. Let me just check the process file function once. Okay, so I think we have not defined the vectorizer here because again Copilot gave this. Vectorizer equals to TF-IDF vectorizer. Okay, what we'll do is we'll fit the chunks. So this is done. Next step is this, yes, check. Then we have ST. This is correct. This is correct. Let's remove this for the time. Hmm, I think we have an issue in the process file function. Let me just check once. If T, yes, I believe this is going to fix it. Let's just remove this. This is all because I copied the whole thing from Copilot. Please don't do that. File dot read dot decode. Yes.
Then we have our chunks, vectors, session state, vectorizer, and this. Okay, I believe this thing should work. Now we have one more error in line 56. This has quite converted into a debugging session, but let's just hope. I hope you guys are also following. If you want, you can refer to the Google, the GitHub repositories link also. Meanwhile, I'll check this. Hmm. Alright, we are getting a response, but we are also getting error generating. Okay, एक लाइन में आई गेस एरर है सक्सेस की स्पेलिंग गलत लिखी लेट्स फाइंड इट Okay, we are getting the responses. Now let's see what it says about the document. Let's see the document first. Yes. Let's ask some questions. We have certain eligibility criteria, certain fee structures over here. All right. So this is a document that contains information about the university admission and all that. Let's just ask it what is the name of the university. Let's see if it is able to answer it. What's the name of the university? Alright, so it has given us correct response that the name of the university is XYZ University. But you might be wondering कि ये all caps में क्यों आया है? The reason is कि यहाँ पे अगर आप देखो since ये हमारा vectorization यूज कर रहा है सो इट जस्ट फाउंड दिस वर्ड और उसने वही रिटर्न कर दिया कि यहाँ ऑल कैप्स में है सो इसमें ये वाला कंटेक्स्ट नहीं है और यू कैन से हमने एलएलएम तक को उसका नहीं बोला है हम बेसिक एक रिट्रीवल यूज कर रहे हैं यूजिंग वेक्टराइजेशन एंड कोसाइन सिमिलैरिटी कि मैच हो वर्ड वही रिटर्न हो जाए सो इसने XYZ यूनिवर्सिटी दे दिया नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कोर्सेज अवेलेबल ओके तो देखो इसने ये कोर्सेज दे दिए बट आई नोटिस्ड कि यहाँ पे तो और भी कोर्सेज हैं BBA MBA MTech PhD इसने हमें अगर इफ़ यू नोटिस आई थिंक बीटेक वाले कोर्सेज दिए हैं और मुझे लग रहा है उसने टॉप वाले जो हमने 3 यूज़ करा था -3 वाली चीज़ वेक्टर में नीचे से उल्टा तो ये हमें टॉप वाले ही दे रहा है सो दिस इज़
a basic retrieval based chatbot with Gemini, you can say. So this is done, but it is working locally. We need to deploy it also. So अभी तक किसी को कोई डाउट आप लोग बता सकते हो मुझे, यहाँ तक सबको समझ में आया? इफ यू हैव फॉलोड, इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can just react with emojis and let me know. All right. Okay. So should we go to the deployment वाला part, or the session is going a little थोड़ा समझ आ गया, फॉलो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं. You can always reach out to me. If I'm available on text, I would be happy to help you. You can also watch the YouTube video. I think Abhishek will be sharing that. So do you guys want me to tell you ki how to deploy on Streamlit, or is it fine till now? Since session थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, I can also share a video on the group कि Streamlit पे deploy कैसे करना है application. You can use the chat section. All right, let's move to Streamlit. So Streamlit पे अगर आपको deploy करना है, you have this whole folder structure over here. आपको क्या करना पड़ेगा, इसे GitHub पे एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी. पहले देखते हैं कि Streamlit का जो वेबसाइट है वो कैसे दिखती है. तो Streamlit पे you can give the link, you can log in through, अगर किसी ने पहले नहीं करा है, through your GitHub account. Then what you can do is you can come over here. Then यहाँ पे जो आपने पुराने क्रिएट कर रखे हैं वो तो आपको शो होंगे, बट अगर आप यहाँ पे आओ क्रिएट एन ऐप, डिप्लॉय पब्लिक ऐप फ्रॉम गिटहब, आपकी रिपोजिटरी जो है वो पब्लिक होनी चाहिए. यहाँ पे आप अपनी रिपोजिटरी का नाम दे सकते हो. ये आपकी गिटहब से कनेक्टेड है तो इसमें सारी आ जाएंगी जितनी भी हैं. देन उसमें जो मेन ब्रांच होती है, यूजुअली मास्टर होती है, वो उसका नाम देना है. देन आपकी जो फाइल का नाम है, यहाँ पे अभी हमने गिटहब पे तो रिपोजिटरी अपलोड नहीं करी है, बट यहाँ पे हमारा ये app.py हो जाएगा. एंड इसमें एक आपको क्या कह सकते हैं, एक फंक्शनैलिटी मिलती है कि आप अपने .streamlit.app से पहले का URL का नाम डिसाइड कर सकते हो इफ इट इज़ अवेलेबल. सो देन यू विल बी एबल टू डिप्लॉय इट. अभी हम क्या करेंगे, लेट्स पुश द कोड टू गिटहब. यहाँ पर आप चाहो, डू यू गाइज हैव गिट डाउनलोडेड इन योर सिस्टम्स? ओके, चलो जिसका नहीं है, लेट मी शो अनदर वे. आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर लो रिपोजिटरी क्रिएट करने की जगह, वहाँ से कमांड्स के थ्रू, क्योंकि कमांड्स फिर मुझे आपको पूरी अच्छे से बतानी पड़ेगी. लेट्स कॉल दिस जेमिनाई रिपोजिटरी, एक बना देते हैं जेमिनाई बॉट. वी विल क्रिएट दिस रिपोजिटरी, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल. अब यहाँ पे आप बेसिकली अपनी फाइल्स चूज कर सकते हो. Let's go with env, let's go with app.py, requirements.txt, it is needed. अब the thing is, what I am going to do is, जो हमारा Streamlit वाली जो एक एक करके अपलोड करने को है, सो हमारी app.py is uploaded, then आपका requirements.txt is uploaded. Next up, इसमें .streamlit वाला फोल्डर शो नहीं हो रहा. नो इश्यूज, वी हैव app.py एंड आर requirements.txt. इतना हो गया. अब देन यू कैन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस. ये आपकी गिटहब रिपोजिटरी बन गई, सिंपल सी. नाउ व्हाट वी विल डू इज, आई विल कम हियर, आई विल राइट जेमिनाई, लेट्स रीलोड इट, जेमिनाई बॉट. देन देखो इसने खुद ही देख लिया कि ये मेन ब्रांच है. हमारी फाइल का नाम इज नॉट स्ट्रीमलेट, इट्स app.py. अब द थिंग इज, आई हैव नॉट पुश्ड द API की. इसका एक दूसरा तरीका भी है स्ट्रीमलेट में, वो ऐप सेटिंग्स के थ्रू आता है, वो अभी हम देखते हैं. सो लेट्स जस्ट डिप्लॉय इट फॉर द टाइम बीइंग विदाउट द API की. अभी अगर आप डिप्लॉय करोगे तो हो सकता है इसमें भी कुछ इशू आए. लेट्स सी, पहले एक बार डिप्लॉय हो जाए, देन वी विल ऐड आवर API.
यहाँ से साइट से आप अपने मैनेज ऐप में देख सकते हो, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लॉग्स आ जाते हैं। अगर कुछ एरर या कुछ इशू है आप चेक करके यहाँ से पता कर सकते हो। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी वाली फाइल थी, अब स्ट्रीमलिट विल एक्सेस दैट एंड वो उसे इंस्टॉल करेगा यहाँ पे। देन आफ्टर दैट जो आपका एक ये क्लाउड पे ही चलता है, कम्युनिटी क्लाउड है बेसिकली। तो यस, देखो ये कह रहा है कि मुझे तो एपीआई की मिला ही नहीं, क्योंकि हमने तो डाला ही नहीं। अब डायरेक्ट आप गिटहब पे पुश नहीं करते हो एपीआई की, उसका भी एक तरीका है, डॉट गिट इग्नोर में आपको डालना पड़ेगा, दैट इज होल अनदर टॉपिक ऑफ गिट। बट यहाँ पे हम आएंगे ऐप की सेटिंग्स में, नॉट ऐप की सेटिंग्स, जस्ट सेटिंग। यस, कहाँ गया जेमिनी बॉट। यहाँ पे आप आएंगे सेटिंग्स में, ये स्ट्रीमलिट वाले इंटरफेस में। देन सीक्रेट्स में आना है आपको। यहाँ सीक्रेट्स में जो सीक्रेट्स वाली फाइल है उसमें मैं ये अपना एपीआई की डाल दूँगी। अब स्ट्रीमलिट विल मैनेज दिस, आपको वो डॉट गेट इग्नोर वाली फाइल वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रीमलिट विल हैंडल योर एपीआई की सिक्योरली। अब ये हो गया, लेट्स रीरन दिस। ओके, आई थिंक हो गया था, ये एक ही बार में हो गया। नाउ सैम्पल डेटा वाली फाइल हम अपलोड कर देंगे, लेट्स सी इफ इट इज़ आंसरिंग और नॉट। पहले एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं। जनरल क्वेश्चन, इट इज़ आंसरिंग परफेक्टली। जो ऐप था वो डिप्लॉय हो चुका है। अब इसमें से वही वाला क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स आस्क व्हाट्स द डॉक्यूमेंट अबाउट। इट इज़ गिविंग अस परफेक्ट रिस्पॉन्सेज, राइट। सो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट के लॉग्स थे हमने देखा, कैसे देख सकते हैं। हमने पहले क्या करा, हमारा जो ऐप डॉट पी वाई वाली फाइल थी एंड रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। अब अगर आप रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी पहले से नहीं बना के रखते हो सकता है आप कोई लाइब्रेरी मिस कर जाओ, इसीलिए मैंने ये पहले फ्रीज करवा ली थी कि आपकी इन्वायरमेंट बन चुकी है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल होगी। ये दोनों आपने अपलोड कर दी। देन हम गए हमारे स्ट्रीमलिट वाले डैशबोर्ड पे, वहाँ पे हमने सेटिंग्स के अंदर सीक्रेट्स में जाके ये जो हमारी सीक्रेट्स डॉट टॉमल वाली फाइल थी वो उसका जो कंटेंट था एपीआई की बेसिकली वो अपलोड कर दिया। सो ये हमारा बन चुका है। अब आप इसे एक्सेस कर सकते हो, आई थिंक आई कैन शेयर इट हियर, देख सकते हो। सो दिस इज हाउ we have built a context aware chatbot and we have deployed it on Streamlit. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। If you have any doubts, you can just unmute yourself and ask. Later on, you can contact me. अगर आपको कोई issue आ रहा है आप YouTube वीडियो भी देख सकते हो। You can get to the original वाली repository ऐसे। So अगर किसी को कोई doubt नहीं है, you can leave the session. Thank you so much for joining and Abhishek and your team can take over. Thank you, everyone.